मात्रा के शब्द और स्वराक्षर व्यंजनाक्षर सबने पढ़ा, स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर यस लिख कर पढ़ा। ओके, और उसके बाद हमने कौन सा वर्ड पढ़ा? 1 minute चिल्ड्रन। ओके, बिना मात्रा के शब्द। हु विल से बिना मात्रा? विच वर्ड? फल। फल मीन्स क्या है? दिया, दिया बताओ। फल, फ्रूट। फल मीन्स फ्रूट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जल। जल का मतलब क्या है अल्जीना? व्हाट इज जल मीन्स? वाटर। वाटर। ओके, फल जल। नेवा, फॉरेस्ट का हिंदी वर्ड क्या पढ़ा हमने? फॉरेस्ट। वन। ओके, वेरी गुड। हाउस, भुवना, हाउस का हिंदी वर्ड क्या है? हाउस, भवन। वेरी गुड, भवन। लोटस, रुद्राक्ष बताओ, लोटस हिंदी वर्ड क्या पढ़ा बिना मात्रा से? लोटस, अनम्यूट करके बताओ। लोटस, वी लर्न 3 letter word. कमल। ओके, वेरी गुड, कमल। नाउ आयरन बताओ, नेक्स्ट वर्ड। हनी हिंदी वर्ड क्या है? हनी, आयरन, अनम्यूट। आयरन पॉल। शहद क्या है? शहद। That much spelling we completed. Now after next topic is आ की मात्रा. Okay, रयर्थ क्या है? कौन कौन सी वर्ड है आ की मात्रा वर्ड? हमने कौन कौन सा वर्ड पढ़ा? Did we completed that revision? तारा, छाता and all we completed? यस Yes. आपने लिखा तारा, तारा, छाता, राजा, राजा, किंग। पढ़ो। बादल क्या है? बादल मीन्स, बादल का मतलब क्या पढ़ा हमने? क्लाउड। और गमला क्या है? गमला, ग्रास का हिंदी वर्ड क्या पढ़ा? ग्रास, घास। Okay, okay. Now we will start our revision. You have to write and study something. So take your rough book, everyone. Okay, take your rough book now. Okay. So listen, before that, till where matra we learn? Till r की मात्रा we completed, no? र की मात्रा, र की मात्रा तक हमने कंप्लीट किया, तो हम र की मात्रा तक पहले लिखेंगे। मात्रा देकर पढ़ो। ओके, यू हैव टू राइट दिस, रिवाइज। देयर इज नो मात्रा। आ, ई, उ और र तक हमने पढ़ा। र तो उसके नीचे देयर इज नो एनी मात्रा। आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है ना? आ, ई, उ, र। Okay, just write this. Write 2 times this, 2 times the same way. Okay, for पहले स्वराक्षर लिखो। आ, ई। Ma'am, this is test paper. No, just write revision. Now we are doing revision. Okay, test paper. After that I will take. Now you should do just write and study this 2 times. उसके नीचे क्या लिखा है? Yeah, can you hear me, children? I told write and study. Write it 2 times. Then why you asking again? Write. Rough book में लिखो. Rough book में. Listen. आ की मात्रा ऐसे लिखो। आ की मात्रा कौन सा है? आ की मात्रा ये है। आ की मात्रा ई, छोटी ई की मात्रा ऐसे लिखेंगे। ई की मात्रा ऐसे लिखेंगे। ऊ की मात्रा। Please mute and talk, please, children. Those who
Who are talking, please mute your audio and write, okay? Listen and write. आ की मात्रा, ई की मात्रा कौन सा है? ई की मात्रा उ, देन ऊ, बड़े ऊ की मात्रा हम ऐसे लिखेंगे, और लास्ट र हमने पढ़ा, र की मात्रा, ये है र की मात्रा. You can write anyway, like आ की मात्रा या the first given. Anyway you can write a, e. Identify the matra, okay? Which letter, how, which matra? आ, ई. कैसे लिखेंगे? ई, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा. आ, ई, उ, र. Ma'am, Mm. write it 2 times. Two times. Identify the matra. आ, कौन सा है आ की मात्रा? आ की मात्रा मीन्स क्या है? स्वर चिन्ह, ओके? वो स्वराक्षर, उसका स्वर चिन्ह है ये. सो आइडेंटिफाई मात्रा, स्वर चिन्ह. आ, मम्मी जिद्दन थोड़ी देखना टी मैं who is that? It is not T, F and all. Who is asking? When we will add how to write ka plus it is not T. Ka is swara chinna. Clear now? E ki matra. Ka. When we will add ka plus E. Then it will come where? Ka before the letter T. Understood? Ka plus E, badi E. Don't think it is not E, F, T and all. It is the matra, okay? Ki. So we will write ki. Ka. Ka ke sath U. It will become ku. Ka. This is full right. Oh, yeah. One time you can copy. Ku. Because many have doubt. What is this? Every day when we will start new matra, I am teaching you now. Ka, swara chinna, matra, ye hai. Like you are studied. Then simply asking, who is asking that? Feba. Ku, ka और र जोड़ने से क्र. अब वर्कबुक में भी ये वर्क किया है. देन वाई डाउट? का, की. छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ, बड़े ऊ. वी लर्न दैट. कॉपी इट वन टाइम दिस ऑल्सो. मात्रा जोड़कर, लेटर नाउ अक्षरों के साथ मात्रा जोड़कर हमने लिखा. पहले स्वराक्षर और उसकी मात्रा लिखा. ओके, स्वराक्षर और उसकी मात्रा. ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. If you don't know anything, you can ask to me. I am here. Okay, who is asking that? I don't know. If you have any doubt, you can ask ma'am why it is given like that. What is that? I will explain. Okay. Ki matra. That's why I told when you are writing, you should read the same. Ki matra. E ki matra. E ki matra. U की मात्रा. ऊ, बड़े ऊ. ऐसे बड़े ऊ और छोटी ऊ भी हमने पढ़ा है. र की मात्रा. Those who are not reading, they have this all doubts. Finish.
Ma'am, this all right. चिल्ड्रन मात्रा मीन्स क्या है? व्हाट आई टोल्ड, मात्रा इसका मतलब क्या है? स्वर चिन्ह. ओके, स्वര ചിഹ്നങ്ങൾ in Malayalam you studied दीर्घ स्वरम, ह्रस्व दीर्घ. The same way हिंदी में पहला ह्रस्व आ, ये आ ह्रस्व है और ये आ दीर्घ है. दीर्घ के लिए हम ये स्वर मात्रा यूज करते हैं, स्वर चिन्ह. ओके, और ई छोटी ई ह्रस्व है, ई दीर्घ स्वर. ओके, ओ ह्रस्व, ऊ इसको हम बड़े ऊ कहते हैं, दीर्घ स्वर है ये. इसको प्रोनाउंस करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है. तो ऊ ये दीर्घ. र र मैम क्या है? का और आ हमको लिखना है. वो भी लिखो एक बार, वन टाइम ओनली. ओके, का वेरी गुड. हु आस्क्ड दैट? वो भी लिखो. ध्रुवा एक बार लिखो. का प्लस आ, का. नाउ वी एडेड विथ लेटर्स. ओके, लेटर के अक्षरों के साथ उसको जोड़कर लिखो. का आ, का ई, की. मैम. When you are writing, you should read, children. We are revising everything, but you have to read and write. Read. Ka a, ka छोटी ई, की. का बड़ी ई, की. का छोटे ऊ की मात्रा कु. का बड़े ऊ की मात्रा कु. Chat box somebody is using. Okay. Joanna, completed? Can you read this, Joanna? Ka plus a. पढ़ो. का आ की मात्रा का. का प्लस. No need to add plus equal and all. का आ की मात्रा का. का आ की मात्रा का. का छोटी की मात्रा की. छोटी की मात्रा की. का पे बड़ी की मात्रा की. बड़ी की मात्रा की. खा का. कौन सी मात्रा है वो? छोटे ऊ की मात्रा. कौन सा? कु. पढ़ो. का बड़े ऊ की मात्रा. का बड़े की मात्रा. कु. read together. You have to add and read that. का पे र की मात्रा कृ. Okay. Now Irene is not giving any answer. What happened, Irene? Daksha, Ridesh, can you read? Daksha, read. Read. Ka आ की मात्रा. का not का. छोटी की मात्रा. की. का बड़ी की मात्रा. की. नॉट गा. का छोटी ऊ की मात्रा. कु. आंसर बताओ. बड़े ऊ की मात्रा. बड़ी ऊ की मात्रा कु. का रे की मात्रा. कृ. Okay, completed, children. Completed. Those who did not complete it can write. Okay, though you can write. Okay, after now we are going to write. Last day you write and studied a की मात्रा. Anna Rose,
A ki matra word. Did you write and study this word? Chata. Write and studied. Huh? Ma'am, I read. Did you write and study this in the last class? Yes. Yes. Chata completed. Chata. Umbrella. Tara. Kya hai Tara? Raja. Who is Raja? Ghas. Kya hai ghas? Okay. Gamla. Gamla. Flower vase. और the next word क्या है? बादल. बादल. क्या है बादल? Cloud. Did all write and study this? Those who did not completed, please listen, children. Okay. Those who did not write and study it, please copy it one time and write it one time, two time. You can write it two time now. Okay. Those who did not complete it. Okay. Nasia, read the words. Nasia completed this last class. कौन सी मात्रा है ये? आ की मात्रा. कौन सी मात्रा? आ की मात्रा वर्ड्स है. ओके. मीनिंग आपको पता है. नजिया, अम्ब्रेला हिंदी वर्ड क्या है? पढ़ो. छतरी. छतरी. We learn that also correct. But now which word is given here? ये कौन सा वर्ड दिया है? छाता. क्या है? छाता. You look and read. छा आ की मात्रा, ता आ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? छाता. हाँ. नेक्स्ट. तारा. तारा. वेरी गुड. तारा मीन्स क्या है नजिया? स्टार. स्टार. ओके. नेक्स्ट. राजा. राजा. कौन है राजा? किंग. किंग. नेक्स्ट वर्ड. घास. देन घास, ग्रास. नेक्स्ट. फ्लावर वेस का हिंदी वर्ड क्या है? गमला. गमला. ओके. नेक्स्ट वर्ड. क्लाउड. क्या है हिंदी वर्ड? बादल. बादल. Those who did not write, they can write it two times. Okay. Now Ananta Padmanabhan can read. Ananta Padmanabhan, please read this word. Read. पढ़ो. Ananta Padmanabha. Read. First word क्या है? छा. छाता. छाता. तारा. तारा. राज. राजा. 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 घास. घास. ग्रास. Okay, very good. Next. गमला. गमला. Next word. बादल. बादल. Very good. Now Sri Parvati पढ़ो. Sri Parvati. Read. Umbrella. Raja. King. Your audio has some problem. It's not clear for me. Gamla. Gamla. Can you hear me? No, your sound is breaking. Now it's okay. Read. Try to read. Gamla. Gamla. बादल. बादल. क्या है बादल? Cloud. Cloud. Okay. Now Elvin Babu, can you read? Elvin, read. पढ़ो पढ़ो. पढ़ो. Elvin Binu. Elvin Binu. Yeah, Elvin Binu पढ़ो. Chata. Umbrella. Tara. Star. Raja. King. Ghas. Grass. Gamla. Flower vase. Badal. Cloud. Cloud. Very good. Okay. So I hope many of you completed this. So the next is which matra? I send the message. You should write it. Start writing. Okay. From you can do revision in all subject. Okay. You start now because it's exam is near now. 29th your exam will start. So you have to try to study all subject. You revise. We send the message. You get holiday. So we send the message. Complete it. Try to study 3 times, 5 times. Okay. So iki matra words. Did you remember? Nazia has completed this all. Yeah. Okay. Pita. Pani. Pita.
How it will come? Pita is okay. Pita, very good. Pita, father. Pani and all. Is it choti? Choti uki matra? Choti uki matra? Father. Pita, father. That's correct. Okay. Next word क्या है? Sir. Sir means क्या है? Choti means it will come before the letter I told you. Sir. Okay. Letter के पहले. Sir. Sir means head. Very good. Din. क्या है din means? Day. दिन का मतलब है day. Okay. Very good. दिन day. बारिश. क्या है बारिश? कैसे लिखेंगे बारिश हम? बारिश. टिकट. टिकट. Okay. टिकट. गिलास. Very good. Okay. So these all words we learn. छोटी ई की मात्रा वर्ड्स. ये सब कौन सी ई की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा वर्ड्स है. Okay. So today till here we have to revise. Those who did not study this word, they can write and study 3 times now. After the class, you should write it again 3 times. Okay. So, now you can start this ticket. This only now we studied. Yes. Ticket. One more word is there. Which one? Gilas. Gilas. La. छोटी की मात्रा है तो हम हमेशा ये लेटर के पहले लिखती है. गिलास मीन्स ग्लास. रीड द वर्ड अगेन. पिता, फादर. सिर, हेड. दिन, डे. बारिश, बारिश. रेन. टिकट, टिकट, टिकट. गिलास, ग्लास. गिलास, ग्लास. गिलास, ग्लास. Read and write. Pita. Adwell is there. Adwell, unmute. Can you read Adwell? This. I didn't finish. 1 minute. I read. Adwell, read. Read. Pita, father. Sir, head. Din. Din, day. Barish. Please mute. Who is that? Please mute your audio. Barish, rain. Ticket. Ticket. टिकट. गिलास. क्या है गिलास? ग्लास. ओके. वेरी गुड. आयरन फिनिश. आयरन, रीड. पिता, फादर, सिर, हेड, दिन, बारिश, बारिश, रेन, टिकट, टिकट, गिलास, ग्लास. Glass. Very good. Now Dia, can you read? Dia, Carmel, read. Dia. Yes, ma'am. Read. Pita, father. It's not. I can't hear you. Read. Pita, father. Sir. Head. Cut.
Barish, rain. Gilas, gilas. Very good. Now, Completed. Can I read? who? Ayapada's completed. Okay. Yes. You can read. Yes. Ayapada's read. Father. Mm, Head. mm, Din. Day. Barish. Rain. mm, Cut. ah, Ticket. mm, Glass. mm. Glass. Very good. Now, Miss read. Mm, Pita. Father. Sir. mm, Head. mm, Din. mm, Day. mm, Barish. Rain. ah, Ticket. okay. Manna. Glass. Very good. Manna, read. Yes, ma'am. Read. Father. Mm, Head. mm, mm. Day. Mm. Ticket. Barish. Rain. Rain. Ticket. Ticket. Okay, very good. Now, children, I am going to take a small test. Google link, I will send it in the evening. Now, I will take a small test. Okay, you match the following. You have to do that. Okay, are you ready? Yes. Those who did not completed this din and all, write and study. Next class we will revise e, u matra. Okay. Now the next small question here I will give. You have to जोड़ कर लिखो या सही मिलान करो. You have to find and मिलान करो या जोड़ कर लिखो. Both सही मिलान करो means matching. Okay. The first one I will give you here. Answer I will write and give you here. You can match it correctly. Okay. Five question. Match the following. You can write this. Ma'am, draw No, you should write the correct answer. Anything you can do, you can write the correct answer. Okay, that is easy for you. Write this. Write this. Okay. Match the following. Question is match the following. Okay, you have to match it. But drawing, when you are writing in the exam time, you can draw it neatly. Yeah, find and write the correct answer to the straight. Okay. Find K plus E, body E. So which is the correct answer? Simple one. Find it. Children, listen that. Ka plus choti ear badi. Find it. Ta plus uki matra. La plus choti ear badi. Ga re.
Ma'am, write the question also. Question you write near that you can write straight, you can write the answer, otherwise draw it. Okay, correct answer. Matching, matching. Simple down. Without writing question, you can match it. Huh? Finish. Finish, Completed. ma'am. Completed. Okay. No completed. Okay. Okay. Do. Yes, completed. Mm. Today, Agnes. Yeah, it's simple now. Only 5 question. Ka plus E. Who is not completed? Anybody is there for completing? Yes, ma'am. Angel. Okay. Those who completed, please. If you did not finish that pida, sir, din and all, you can complete that. Okay. Okay. Ma'am, that's complete. Okay. Please be quiet. Those who completed, please be quiet. Ma'am, keywords. Show me. क्या है? Aki matra keywords. Please show me. You don't have notebook? Who asked that? It's there no, in your notebook. Yeah, I will send this all words today in your class group. Okay, till choti ki matra words, every words I will send it in your class group. Those who did not complete it, write and study that. Okay. Revise karo. Okay. Now listen, ka plus E. Which is the answer? What is that answer? Ki. Ka plus O. You have to match it. To. La. Choti ki matra. Li. Not li. Li. Okay. Sometime I will give li also somewhere. You have to find the correct answer. Okay. Now it is given, not given. Okay. Gha plus R. Gr. We studied grh. Okay. Na plus A. Na. You have to match it like na. Okay. Completed matching. Okay. Matching also completed. The same way. Okay. Now next I will no need to write now. Now I will give this kind of questions also. E. U. No need to write. R. Then I will give the opposite side. Here matra of Friend, you got 5 out of 5. How you will match it? Pehla A, which is the matra? Aki matra. You have to find and match it like, okay. E ki matra. O, which is U ki matra? A hai U ki matra. Or R. So you have to study that R ki matra. Till R ki matra we study. Okay, children. So the next class we will revise which all chapter, which all topic? Badi ki matra. U. U ki matra. R ki matra and रंगों के नाम we will next class also. Okay, we will. क्या है?